Probability of class 10th R.D. Sharma, exercise 13.1. Now this is question number 5. Two unbiased dice are thrown. Two unbiased dice are thrown. Find the probability that the total of the numbers on the dice is greater than 10. The sum of two numbers should be greater than 10. So when we throw two unbiased dice, and total possible outcomes will be 6 into 6, that is 36. That is 36. So two unbiased dice are thrown. Then total number of possible outcomes is equal to 6 into 6, that is 36. Okay, so sum of numbers on the dice is greater than 10. Greater than 10 means 11 or 11 and 12. So favorable outcomes for total on the dice is greater than 10 is equal to, greater than 10 means 11 or some 11 and 12. So we can write the cases for the sum 11 and 12. 5 comma 6, 6 comma 5, this is 11 for 11, and 6 comma 6. Only these three cases, that is 3. So therefore probability of getting total on the dice is greater than 10 is equal to total number of possible outcome 36, favorable outcomes 3. 3 1 ja 3 and 3 2 ja 6. That is 1 upon 12. This is the required probability of getting a total greater than 10. In this question, 18 parts are there. Very small parts. So we will take one by one. A card is drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is. A card is drawn at random from a pack of 52 cards. Total number of cards 52. So we have to find out the probability of drawing these cards. So total number of cards, total number of cards is equal to 52. First part, a black king. So favorable outcomes
for a black king is equal to how many black kings? Total 4 kings. Out of 4, 2 kings are red and 2 kings are black. So favorable outcomes for a black king 2. Therefore, probability of getting a black king is equal to total number of cards 52, favorable outcome 2, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 6 ja 12. So 1 upon 26. 1 upon 26 is the required probability. Drawing a black king is probability of getting a black king 1 upon 26. Second part, either a black card or a king. Or means plus black card plus king. So favorable outcomes for either a black card and or a king. Total number of cards are 52. Favorable outcomes for either a black card or a king. So how many total black cards? 26 black cards. Yeah? And or a king. How many kings? There are 4 kings. But out of 4 kings, 2 kings are black card. 2 kings are of black color. And 2 are red. So 2 already included in this 26. So plus 2. So 26 black card and plus 2 red kings. Total 4 kings. 26 plus 2, 28. Therefore, probability of getting either a black card or a king is equal to total number of cards 52 and favorable outcome 28. You can cancel by 4. 4 7 ja 28, 4 1 ja 4, 4 3 ja 12. 7 upon 13. 7 upon 13 is the probability of getting either a black card or a king. Next, black and a king. Favorable outcomes for black and a king मीन्स जो कार्ड है वो ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए. तो हाउ मेनी ब्लैक किंग्स आर देयर? ब्लैक कार्ड तो 26 होते हैं, लेकिन वो 26 ब्लैक कार्ड में ब्लैक कार्ड भी हो और किंग भी हो, तो कितने किंग ब्लैक होते हैं? 2 ओनली. तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर ब्लैक एंड किंग, वो कार्ड ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, ब्लैक भी हो और किंग भी हो. तो ब्लैक किंग्स आर 2. So therefore, probability of getting black and a king is equal to total number of cards 52, favorable outcome 2, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 6 ja 12. That is 1 upon 26. This is the probability. 1 upon 26. Next part, a jack, queen or a king. So favorable outcomes for a jack.
queen or a king. फेवरेबल आउटकम्स फॉर अ जैक, कितने जैक होते हैं 4, किंग कितनी, क्वीन कितनी 4 और किंग कितने 4, 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 12, so total favorable outcomes 4, 4 total favorable outcomes 12. Therefore probability of getting a jack, queen or a king is equal to total number of cards 52, favorable outcome 12, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 upon 13, 3 upon 13, 3 upon 13. This is the required probability. 3 upon 13. Next part, neither a heart nor a king. ना तो वो हार्ट हो और ना ही वो किंग हो. So favorable outcomes, favorable outcomes for neither a heart nor a king. तो किंग भी नहीं होना चाहिए और हार्ट भी नहीं होना चाहिए. तो फेवरेबल आउटकम 52 में से कितने हार्ट होते हैं, 13 हार्ट्स माइनस कर दिए. अब नॉर अ किंग, और वो किंग भी नहीं होना चाहिए. तो ये जो 13 हार्ट्स हैं इसमें एक किंग चला गया, आपका एक किंग पहले माइनस हो गया. अब बचे और 3 किंग, 3 और किंग बचे, वो 3 को और माइनस कर दो. टोटल 4 किंग होते हैं, उसमें से एक किंग हार्ट का होगा और 3 किंग दूसरे होंगे. तो हमको जो कार्ड चाहिए वो कैसा चाहिए, वो हार्ट का भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो 13 कार्ड 13 हार्ट में से भी ना हो और वो किंग भी ना हो. तो बचे वाले जो 3 किंग्स है वो भी नहीं होना चाहिए. तो इसको माइनस कर देंगे. 52 माइनस 13 माइनस 3, 52 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 6, 4 माइनस 1 3, 36. तो 36 ऐसे कार्ड होंगे जो ना तो हार्ट के होंगे और ना ही वो किंग होंगे. So now therefore probability of getting neither a heart nor a king, ना तो वो हार्ट है और ना ही वो किंग है. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, फेवरेबल आउटकम्स 36, तो कैंसिल कर लो. 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 9 upon 13. This is the probability of getting neither a heart nor a king. Next part, a spade or an ace. A spade means kala pan or ace. So favorable outcomes for a spade or an ace. तो स्पेड कितने होते हैं 13 प्लस एस कितने रहते हैं 4, 4 में से एक तो स्पेड का एस हो गया. अब रिमेनिंग कितने बचे, 3s और बचे, तो प्लस 3, तो 16 हो गई. Therefore probability of getting a spade or an ace is equal to total number of cards 52, favorable outcome 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 upon 13, 4 upon 13 is the probability of getting a spade or an ace. Next part, neither an ace nor a king.
ना तो उसको एस होना चाहिए और ना ही उसको किंग होना चाहिए। नाइदर एन एस नॉर अ किंग, तो इसके फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स फॉर नाइदर एन एस नॉर अ किंग। सो टोटल 52 है, इसमें से एस को हटा दो, 4 एस हट गए, और नॉर अ किंग, एस भी नहीं होना चाहिए और किंग भी नहीं होना चाहिए, तो किंग, किंग को भी हटा दो, 4 किंग है। नाइदर एन एस, 4 एस है, 4 एस भी नहीं रहेंगे, और नॉर अ किंग, 4 किंग भी नहीं रहेंगे, तो 4 4। तो अब बचे वाले जो कार्ड होंगे वो ना तो एस है और ना ही किंग है। तो 52 माइनस 8, 12 माइनस 8 4, और ये 4, 44। So therefore probability of getting neither an ace nor a king is equal to total number of cards 52, favorable outcome 44। इसको 11 4 से कैंसिल कर लो, 4 बन जा, 4 बन जा, 4 बन जा, और 4 3 जा। सो टोटल पॉसिबल आउटकम, ये required probability 11/30. This is the answer. Next part, neither a red card nor a queen. Favorable number of outcomes let लो इसके, favorable outcomes for neither a red card nor a queen is equal to, ना तो कार्ड रेड कार्ड होना चाहिए और ना ही क्वीन होना चाहिए, तो 52 में से रेड कार्ड माइनस कर लो, 26, और क्वीन भी नहीं होना चाहिए, तो क्वीन जो होती 4 होती, तो 4 क्वीन में से 2 क्वीन रेड कार्ड की वो माइनस हो गई, अब बची 2 ब्लैक क्वीन, उसको भी माइनस कर दो, तो 52 माइनस 28, 12 माइनस 8 4, 4 minus 2 2, 24। So 24 cards are there, they are neither red card nor a queen, therefore probability of getting, probability of getting neither a red card nor a queen, nor a queen is equal to total number of cards 52, favorable outcome 24, cancel by 4, 4 6 ja 24, 4 1 ja 4, 4 3 ja 12, 6/13, 6/13. This is the required probability. Next part, the 7 of clubs, चिड़ी की सत्ती, चिड़ी का सत्ता, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर द 7 of clubs, 7 of clubs। सो चिड़ी के सत्ते कितने होते हैं, एक ही होता है, एक ही कार्ड होगा, 7 of club। So therefore probability of getting the 7 of clubs is equal to total possible outcome 52, favorable outcome 1, 1/52 is the probability of getting the 7 of clubs। Next part, a 10, 10 मतलब देहला, favorable outcomes for
a 10. How many tens? 4. Therefore, probability of getting a 10 is equal to total number of cards 52, favorable outcome 4, 4 1 ja 4, 4 3 ja 12, 1 upon 13. 1 upon 13 is the probability of getting a 10. Next part, a spade. Spade means kalapan. So favorable outcomes for spade. Favorable outcomes for a spade. How many spades? 13 spades. So therefore probability of getting a spade. Total number of cards 52 or favorable outcome 13. 13 1 ja 13, 13 4 ja 52. So 1 upon 4. This is the probability of getting a spade. Next one, a black card. Favorable number of outcomes. Favorable outcomes for a black card. How many black cards? 26. 26 black and 26 red. So therefore probability of getting a black card. Total number of cards 52. Favorable outcome 26. 26 2 ja 52. 26 1 ja 26, 26 2 ja 1 upon 2. Probability of getting a black card is 1 upon 2. A king of clubs. Favorable outcomes for a king of clubs. How many kings of club? Only one. चिड़ी का एक ही किंग होगा उसके अंदर. Therefore, probability of getting a king of clubs is equal to total number of cards 52, favorable outcome 1, 1 upon 52. Next part, jack. How many jacks? 4. Favorable outcomes for jack is equal to 4. So therefore probability of getting jack is equal to total outcome 52, favorable cases 4. 4 1 ja 4, 4 3 ja 12, 1 upon 13. 1 upon 13 is the probability of getting jack. Next, the ace of spades. काले पान का इक्का. Favorable outcomes for the ace of spades. काले पान के कितने इक्के होते हैं? एक ही होता है, 1. Therefore probability of getting the ace of spades is equal to total number of outcome 52, favorable outcome 1. 1 upon 52 is the probability of getting a space ace of spades. A queen. How many queens? Favorable 4 queens.
favorable outcomes for a queen. There are 4 queens, so therefore probability of getting a queen is equal to total possible outcomes 52 or favorable outcome 4. 4 1 ja 4, 4 3 ja 12, 1 upon 13. 1 upon 13. Probability of getting a queen is 1 upon 13. A heart. How many hearts? 13. So favorable outcomes for a heart. 13 hearts. Therefore, probability of getting a heart total number of cards 52, favorable outcome 13. 13 1 ja 13, 13 4 ja 52. 1 upon 4. 1 upon 4 is the probability of getting a heart. How many red cards? Favorable outcomes for a red card is equal to 26. 26 red card and 26 black cards. Therefore, probability of getting a red card is equal to total number of outcomes 52, favorable outcome 26. 26 1 ja and 26 2 ja 52. 1 upon 2. This is the probability of getting a red card. It's enough for today. So remaining questions we will solve in next class. Okay, bye.